हेलो व्यूअर्स MfM को आपको स्वागत। आज वीडियो रे हमें देखिबा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सो सपोज हमें y इक्वल्स टू fx गोटे डिफरेंशियल फंक्शन नेबा एंड z इक्वल्स टू gx आ गोटे डिफरेंशियल फंक्शन नेबा। सो एटा मु लिखि दोछि। सो हमर मेन टार्गेट होछि derivative of y with respect to z. So बाहर करवा dy by dz. So इटा बाहर करवार माने होची जो y equals to fx अछि सेठी हमें dy by dx बाहर कर दबा, that is f dash x आसीबो एंड जो z equals to gx अछि सेठी dz by dx बाहर करबा, that is g dash x आसीबो। सो फाइनली जते बेले हम dy by dz बाहर करबा सेते बेले ए हबो dy by dx divided by dz by dx। सो यासला f dash x divided by g dash x। सो जेमते हम पैरामीट्रिक फंक्शन रो डेरिवेटिव बाहर करथिले एग्जैक्टली से टाइप रो एठी भी सेमते बाहर करबा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन पचारछि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x with respect to cos inverse x। सो यारो सॉल्यूशन देखिबा। सपोज एठे tan inverse x को y नै जिबी एंड cos inverse x को z नै जिबी। सो दैट एठे जतल डेरिवेटिव बाहर करिवि dy by dx equals to यासिबो 1 by 1 plus x square एंड एठी जतल dz by dx बाहर करिवि सेतबेले आसियो -1 by root over of 1 minus x square। सो जतबेले dy by dz बाहर करिवि ए आसिबो dy by dx divided by dz by dx। so that यासला 1 by 1 plus x square divided by -1 by root over of 1 minus x square। so that finally dy by dz asla minus root over of 1 minus x square divided by 1 plus x square। ये finally answer। Similarly our question पचारिछि find the derivative of sin inverse 2x divided by 1 plus x square with respect to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square। so this with respect to this एटा बाहर करबा। so जेमती हम नथिले let y equals to sin inverse 2x divided by 1 plus x square and z equals to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square। so जति मु x equals to tan theta put करिवि ताले यासिबो थीटा टा आसिबो tan inverse of x। so x यदि tan theta put करिवि putting x equals to tan theta then यासला y equals to sin inverse of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta and similarly 80 z equals to cos inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta। so that y equals to sin inverse of 2 tan theta by 1 plus tan square theta माने होचे sin 2 theta and 80 z equals to cos inverse of
1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta মানে হচ্ছে cos 2 theta. So এটি y equals to আসলা 2 theta যেহেতু কিছু কন্ডিশন গিভেন নেই সো এটা আমরা ডাইরেক্ট লিখে দেবা and এইটি z equals to আসলা 2 theta. So থিটার মানে হচ্ছে tan inverse x. So 2 tan inverse of x. এটা হবে 2 tan inverse of x. So it is the derivative বের করিয়া with respect to x তাহলে আসবে dy by dx equals to 2 by 1 plus x square. Similarly it is the derivative of z with respect to x যদি বাহার করিবা তাহলে আসবে 2 by 1 plus x square. So ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ଲେଖୁନି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ ଯାହାକି differentiating y with respect to x or differentiating with respect to x we get this. It will be differentiating with respect to x we get this. एमती लिखिबे. So ଆମର dy by dx আসला 2 by 1 plus x square and dz by dx আসला 2 by 1 plus x square. So ଯେତେବେଳେ ଆମେ dy by dz ବାହାର କରିବା ତ ଫାଇନାଲି ଏ ଆସିବ କ'ଣ dy by dx divided by dz by dx. So ଆସିଗଲା 1. So dy by dx equals to dz equals to dy by dx divided by dz by dx. So আসলা 2 by 1 plus x square divided by 2 by 1 plus x square cancel होके आ 1 रहला. So ये है फाइनली आंसर. So ए टाइप रो एक्सरसाइज रो अन्य गुडा को प्रॉब्लम अछि. So आज रो वीडियो एट रखिबा. यदि ये वीडियो रे किसी डाउट थाए ताले आपण हमको कमेंट बॉक्स रे ईमेल रे कि हमर व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्ये पचरि परिबे. व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करिया पई डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करंतु. थैंक यू.